Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is chapter 7th, volcanoes. In this chapter today we revise here world distribution of volcanoes and effects of volcanic activity. Okay, and last video we discussed in this chapter what is the volcano and types of volcano, or here we discuss world distribution of volcanoes and effects of volcanic activity. Okay, so now we start here. World distribution of volcanoes. There is geological evidence of past volcanic activity in most part of the world. The total number of extinct volcanoes run into thousands. There are about 500 active volcano in the world today. मीन्स हमारे पास बहुत सारे एविडेंस पड़े हुए हैं जो पास्ट में जिनके वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे. ओके, एंड if we see in the whole world, तो near about thousands of extinct volcano. Extinct means those are totally dead, जो खत्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुकी है. ओके, बहुत thousands की क्वांटिटी में है. But the active volcano in the world only 500. Okay, so distribution of active volcano is not uniform. Most of them are associated with area of crustal instability. मीन्स हमारे जो एक्टिव वॉल्केनो है नॉट यूनिफॉर्म ऑल द प्लेस, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. सम प्लेस आर देयर वेयर वी कैन से कि टू मच एक्टिव वॉल्केनो इज देयर, एंड सम प्लेस आर देयर वेयर मॉडरेट, और सम प्लेस आर देयर वेयर वेरी रेयरली वॉल्केनिक इरप्शन इज देयर. ओके, सो उसके पीछे जो कॉज है वो है आपका मोस्ट ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद एरियाज ऑफ क्रस्टल इंस्टेबिलिटी. जहाँ क्रस्टल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पर मैक्सिमम volcanic eruption originate होते हैं. Crustal instability means, crust means your earth surface, instability means जो stable नहीं है. You know तो कि हमारे अर्थ के नीचे डाउनवर्ड साइड ऑलवेज इंटरनल फोर्सेस एक्टिव रहती है, और ड्यू टू दैट हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर चेंजेस आती रहती हैं रेगुलर. ओके, सो क्रस्ट में जहाँ यू नो तो कि व्हेन वी मूव डीप इनसाइड द अर्थ योर टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ये रॉक्स आर इन मेल्ट पोजीशन, एंड अपर पार्ट इज द सॉलिड पार्ट ऑलवेज फ्लोटिंग कर रहा है उस लिक्विड मटेरियल के ऊपर. ओके, सो नाउ सच एरियाज आल्सो एसोसिएटेड विद द यंग फोल्ड माउंटेन. मींस जहां क्रस्ट इंस्टेबिलिटी है वहां फोल्ड माउंटेन्स अकर हो रहे हैं. यू नो टू वी ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो कि मैक्सिमम वॉल्केनिक इरप्शन आर बॉर्डर ऑफ टू प्लेट्स. जो टू प्लेट्स और ये जो बॉर्डर होता है यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्केनिक इरप्शन ऑरिजिनेट होते हैं. ओके, उसके पीछे कॉज क्या है कि सम टाइम योर प्लेट्स आर कन्वर्जेंट टू ईच अदर, एक क्लोज आती है, एंड सम टाइम डाइवर्जेंट टू ईच अदर. डाइवर्जेंट मींस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना, और कन्वर्जेंट मींस फेस टू फेस वर्क करना. ओके, सो ड्यू टू दैट यहाँ पर क्रस्टल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इन द बॉर्डर ऑफ टू प्लेट्स. सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम वॉल्केनिक इरप्शन आर अकर इन द बॉर्डर ऑफ टू प्लेट्स. So most of active volcanoes are found in the two major belt of the crustal instability. First is the circum-Pacific belt. Second is the Mediterranean belt. Okay. So firstly we discuss here. First point, the circum-Pacific belt. So about 80% of all active volcanoes of the world are found in this belt surrounding the margin of Pacific oceans. Just see with your map. This is your North America, South America, here Asia, and after here Japan, Indonesia, Philippines, like this your countries there, and in between this part is called Pacific Ring of Fire. Okay, here आपके लिए about 80% एक्टिव वॉल्केनो होते हैं. उसके बीच जो कॉज है ड्यू टू द कन्वर्जेंट प्लेट ऑफ प्लेट्स. यहाँ जो प्लेट्स होती हैं वो कन्वर्जेंट दूसरे मूव कर रही हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होते हैं. ओके, सो ऑलमोस्ट 80% of the all active volcanoes of the world are found in this belt surrounding the margin of Pacific oceans. Okay, and volcanoes are associated with the belt throughout its length. For this reason, it is often called
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मीन्स इसकी जो टोटल लेंथ है इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की अबाउट 40,000 किलोमीटर है. ओके, और it is also known as Pacific Ring of Fire because near about 80% active volcano are occur in this belt. Okay, and now the major area of active volcano in this belt include Andes Mountain in South America. This is your Andes Mountain. Of that, Rockies Mountain in north of North America, and Japanese island. Here आपका Japan island there, and Taiwan, फिलीपींस और इंडोनेशिया आइलैंड. ओके, तो ये सारे लाइन में है बेटा. ओके, दिस आर द एरिया वेयर लाई दिस बेल्ट. एंड द इंपॉर्टेंट वोल्केनो इन दिस बेल्ट इंक्लूड चिम्ब्रेजो एंड कोटोपेक्सी इन द एंडीज एंड फुजियामा इन जापान और माउंट म्योगन इन फिलीपींस एंड Krakatoa in Indonesia. Some example of active volcano. Those are like the Pacific belt. Okay, Pacific ring of fire. So this is your first point, circum-Pacific belt. About 80% active volcano there is also known as Pacific ring of fire, and its length is about 40,000 kilometers. Okay, and the area of active volcano in this belt are Andes Mountain of South America, Rockies Mountain in North America, Japanese island, Taiwan, Philippines, and Indonesia. Okay, and the important volcano in this belt include Chimborazo and Cotopaxi in Andes, the Fujiyama in Japan, Mount Mayon in Philippines, and Krakatoa in Indonesia. These are some example of active volcano. Those are lie in the Pacific ring of fire. Now we start a second point. The Mediterranean belt is also known as mid-world mountain belt. This belt stretches from Mediterranean Sea towards the Himalayas and include the Alpine and Himalayas mountain system. Means first of all we see the map. This is your middle belt, and this belt is start from here in the Mediterranean Sea. After that Iran, Iraq, after that Pakistan, in India में Himalayas, and end of the Himalayas it turned toward the south, and after reaching the Andaman Nicobar Island, and after that merged with the Pacific Oceans near the Indonesia. Okay, this is your second point. Is the mid-world belt. Okay, so we start here. The Mediterranean belt, also called mid-world mountain belt. This belt stretches from Mediterranean Sea towards the Himalayas and include the Alpine and Himalaya mountain system. And from the eastern end of the Himalayas, this belt turned towards the south and extending through Andaman and Nicobar Island and merge into the circum-Pacific belt in Indonesia. Okay, it means this belt starts from the Mediterranean Sea. After that, it moved towards the eastern side. After that, Alpine mountain system. After that, cross the Himalayas, and end of the Himalayas it turned the south side. And after that, it reaching the Andaman Nicobar Island. After that, near the Indonesia, it merged with the Pacific Ring of Fire. Okay, and now the number of active volcano in this zone is lesser than in the circum-Pacific belt. It means in the middle part में यहाँ जो volcanic eruption हो रहा है इसमें less as compared to आपकी जो ये Pacific Ring of Fire है here too much है. After that इसके से कम the middle world belt में. Okay, so the important active volcano in this belt in the Mount Vesuvius, Mount Etna, and Mount Stromboli. Okay, and Barren Island and active volcano in the Andaman Island also lie in this belt. This is the example of active volcano. Those are lie in the Mediterranean belt. Okay, and third point here other region. In left in two regions को छोड़ के other जो whole world part है इसमें important volcanic eruptions outside these two belts include the margin of Great African Rift Valley. This is a Great African Rift Valley. Okay, and Mount Kilimanjaro or Mount Kenya, some example of active volcano. Those are in the African Rift Valley. And the volcanic islands such as Cape Verde and Canary Island in Atlantic Oceans and the Hawaii Island in the Pacific
ocean. So the third point, other region means except the two region, Pacific Ring of Fire और मिड वर्ल्ड बेल्ट को छोड़ के अदर जो एरिया है जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं वो आपके ये अलाइन कर रहे हैं. ओके, एंड आफ्टर दैट next point we discuss here, effect of volcanic activity. So effect always two types are there, एक तो positive और negative. Clear? Effect of volcano positive और negative. Okay, so destructive effect means negative impact. जब volcanic eruptions का क्या effect देखने को मिल रहा है, negative effect. Okay, and constructive effect means benefit क्या है volcanic eruption की. Okay, so first of all we discuss here destructive effect. So volcanoes have a profound effect on life on the earth. Profound means heavy, ये भी किसी sound too much means volcano have a profound means इसका जो most effect है, सबसे ज़्यादा जो effect पड़ रहा है on life. Okay, and eruption is the destruction of life and property. Means first loss क्या है, it affect the life and property. Okay, due to volcanic eruption का जो main destructive effect है loss of life and property. Okay, the first point. Second, steam from volcanic eruption may lead to heavy rainfall causing landsliding, mud flow or flood. We already discussed in the last video when volcanic eruption escape outside, and due to that so many gases escape also outside, and in the gases 90% जो gas होती है आपकी steam. Or you know when steam move outside according to high temperature decrease and condensation or heavy rainfall or occur. So sometime volcanic eruption के through जब when steam too much outside escape हो रही है तो that time आपकी heavy rainfall होती है और due to that landsliding, mud flow और flood जैसी situation create हो जाती है. Okay, ये second destructive effect of volcanic. Okay, and volcanic eruption in the coastal areas or on the island lead to high waves and large scale of flooding in the coastal region, destroying settlement. In some time, after volcanic eruptions are occur near the coastal areas or near the island, due to that large waves are we can say start towards the coastal areas due to the volcanic eruptions, or due to that sometime flooding situation are created near the coastal areas. Okay, or due to that some great loss of life and property, and many poisonous gases come out at the time of volcanic eruptions and cause environment pollutions. This is the fourth point, कि so many gases escape outside or these are very harmful for our environment. Okay, so this is your destructive effect of volcanic eruption. Therefore first is a great loss of life and property. Second, steam escape outside or due to that heavy rainfall occur, and due to that landsliding, mud flow or flood are created. And next is sometimes volcanic eruptions are caused created near the coastal area, or due to that flooding situation are created near the coastal areas due to the high waves, and many poison gases come out at the time of volcanic eruption and cause environment pollution. And here last point, constructive effect. अब benefit क्या है volcanic eruption से? So you know when volcanic eruption occur, due to that hot molten rocks, we can say magma, escape outside and deposit on the surface and deposit slowly cold or solids called lava. So you know तो कि when lava breakdown होता है by the external factors, जितनी हमारी external activity है by the temperatures, by the rainfall, by the glacier, ये किसी भी cause की वजह से हमारी जो रॉक्स ब्रेकडाउन हो रही है, लावा ब्रेकडाउन हो रहा है, उससे आपकी ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है और ब्लैक सॉइल इज फर्टाइल सॉइल, एंड लावा डिपॉजिट एज अ रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन गेट वेदर्ड. वेदर मींस ब्रेकडाउन इनटू फर्टाइल सॉइल, कि आपका जब लावा ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो फर्टाइल सॉइल में ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, दिस इज अ बेनिफिट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन. एंड ऑफ volcanic rocks contain a number of minerals. So you know तो जब volcanic eruption होता है तो अर्थ के इनसाइड से बहुत सारी molten rocks होती है वो आउटसाइड आती है, और ड्यू टू दैट बहुत सारे मिनरल्स हमारे escape होते हैं आउटसाइड. ओके, दिस इज सेकंड पॉइंट. we get different type of minerals due to the volcanic activity. Okay, and spring and geyser associated with volcanic area contain mineral salt in solution. You know those spring or geyser both are hot water. ये क्या है?
हॉट वाटर एनर्जी, दोनों ही मीन्स स्प्रिंग और गीजेस होते हैं, जब वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं तो ऐसे मिनरल से होकर वाटर बाहर आता है और वो बॉयल करना शुरू करता है, और ये वार्म वाटर होता है और उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिक्स होते हैं, और ड्यू टू दैट ये स्किन डिसीजेस के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। तो एज ए मेडिसिन वैल्यू भी है इसकी, और वो हॉट वाटर वी गेट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर पार्ट से, ओके। एंड द हीट एनर्जी ऑफ हॉट स्प्रिंग कैन बी हार्नेस्ड फॉर जनरेटिंग पावर। जब वार्म वाटर बाहर आता है तो स्टीम बाहर आती है, और ड्यू टू स्टीम हार्नेस मीन्स यूज करना फॉर द जनरेटिंग पावर, हम इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए या फॉर्मेशन ऑफ जनरेटिंग पावर के लिए भी करते हैं, ओके। एंड फिफ्थ वन, द वॉल्केनिक एक्टिविटी एड टू द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसकी जो ब्यूटी होती है समटाइम लैंड की फीचर्स की क्रिएट करती है, मींस ब्यूटीफुल लैंड देखने को मिलता है, ओके। दिस आर द कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। फर्स्ट वी गेट द ब्लैक सॉइल ड्यू द weathering of lava, and after we get different type of minerals, and third is we get spring or geyser. Those are medicine value in our life for the skin especially, and the heat energy of hot spring can be harnessed for the generating power, or your volcanic activity add to the beauty of landscape, okay. So today we discuss here the topic world distribution of volcano and effects of volcanic activities. Thank you.